everyone. I'm Cyrus S. Haque and I teach ONA level physics. My session for May-June 25 examination is going to start from 15th of October for O-level, IGCSE, AS level and A2. It's going to be a comprehensive, detailed 5-month session in which we're going to get a lot of practice from past papers, assignments, worksheets and quizzes. So what are you waiting for? Register via the link in bio and our team will assist you in registrations. What is a conical pendulum? We have here a fixed point and we have this weight here like this, and this weight is going to move in a circle like this, all the way like this, right? For example, ठीक है, ये इसका सेंटर है यहाँ पे, तो देखिए ये एक ऊपर फिक्स सपोर्ट है और ये सर्कल में मूव कर रही है, राइट? Can you visualize this? It's moving in a horizontal circle, right? And let's say that the radius of the circle is r. Okay, this is the radius of the circle, and let's say that there's a force which is acting downwards, and that is the weight. I'll call this mg. Okay, the weight is acting downwards. There is some tension in the string. I will call that capital T. Okay, T is the tension in the string. तो टेंशन भी है यहाँ पे, वेट भी है, और ये ऑब्जेक्ट सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से मूव भी कर रहा है सर्कल में, ठीक है? अगर आप थोड़ा गौर करें तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा विद अ वर्टिकल, दिस एंगल हियर इज आल्सो गोइंग टू बी थीटा. यू नो व्हाई? ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, ठीक है? ये आपके पास रेडियस है, ये रेडियस है, ये टेंशन है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा. अच्छा, ये आपके पास जब इस तरह से आएगा तो इसके कुछ कंपोनेंट्स बन जाएंगे टेंशन के. आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है? So this thing is t cos of theta. This component here is t cos of theta in this direction. एंगल के साथ हमेशा cos आता है, adjacent, और एंगल के सामने हमेशा sin आता है. So this component is going to be what? This is t sin theta. I'll call this t sin theta. This component which is towards the center of the circle. ठीक है, समझ आ रही है जी? मैं यहां लिख देता हूं t sin of theta. So far so good. t cos theta सपोर्ट कर रहा है वेट को, t sin theta क्या कर रहा है? It's providing the centripetal force, ठीक है? So what's happening is that the t cos theta is supporting the weight mg, and t sin theta is providing this component of the tension here is providing the centripetal force. And we can write it like this: t sin theta is equal to mv square over r. So we have one equation which is here, and we have one equation which is here, right? एक t cos theta mg की इक्वल है और t sin theta हमारे पास mv स्क्वायर ओवर r की. अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि थीटा कभी 90 नहीं हो सकता. Why? What is the reason? Why can theta never be equal to 90 degrees? Why can theta never be equal? What is the reason? आप पेंडुलम है आपके पास और कॉनिकल पेंडुलम मूव कर रही है, तो थीटा ये इधर क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल कभी इस तरह क्यों नहीं हो सकता? What is the reason? अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल
ये 90 डिग्री हो गया, तो वेट को क्या चीज सपोर्ट करेगी? कोसाइन ऑफ 90 इज 0। तो अगर आप टी कॉस ऑफ 90 करें, अगर आपको साइन का ग्राफ अगर आपको याद हो, दैट इज लाइक दिस। तो 90 पे कोसाइन 0 होता कि नहीं होता? सो टी कॉस 90 is, since cos 90 is 0, so it cannot support the weight. अच्छा, अब हमारे पास जो है वो ये सिनेरियो आ गया। वी कैन फाइंड द एंगल थीटा बाय यूजिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो टी साइन थीटा है, दैट इज mv square over r. You can also write it as m omega square r. There is no harm in that. Or you can write here t sine theta is equal to m omega square r, right? अच्छा, दूसरा वाला फॉर्मूला था t cos थीटा इज इक्वल टू mg। हम लोग फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ थीटा। क्या तरीका है जी, क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, या इक्वेशन वन को इक्वेशन टू पे डिवाइड कर दें। ठीक है, मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेता हूं। मैं t को सब्जेक्ट बना लेता हूं। दिस इज t इज इक्वल टू mg over cos theta. I'll call this equation number 2. This is equation number 1. And I will put equation 2 into equation 1. Can I do this? Okay. So I have here t sin theta is equal to mv square over r. और t की जगह मैं पुट कर सकता हूं यहाँ पे mg over cos theta into sin theta. ये समझ आ रही है सबको? So from where did we derive equation 1 from? Beta, equation 1 was derived from the fact that the tension provides a centripetal force. You see, ये आपके पास इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, ठीक है? और ये देखिए, ये सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है? ये सर्कल में मूव कर रहा है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है हमारे पास। तो टेंशन का जो कोई ना कोई कंपोनेंट तो आपको सपोर्ट करेगा ना, सेंट्रिपेटल फोर्स। वेट तो सेंट्रिपेटल फोर्स देने से रहा, क्योंकि वो बिल्कुल वर्टिकल है। तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट बन रहा है ये, दिस, एंड दिस कंपोनेंट इज हियर टुवर्ड्स द सेंटर। ये बात समझ आ रही है सबको? Now this component is what? If you look closely, this is theta. So this is T sine theta. Tension force है, तो force centripetal force भी force होती है। So T sine theta is equal to the mv square over r. और ये component था मेरे पास T cos theta. So T sine theta is equivalent to mv square over r because it is providing the centripetal force. ठीक है? And the other one is supporting the weight. So we were able to derive these two equations from here. ठीक है जी, क्लियर है सबको ये? ऑल ऑफ यू, आप लोगों को सबको क्लियर है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सो आई विल जस्ट साइमल्टेनियसली सॉल्व देम, एंड दिस इज गोइंग टू बी, ये एम एम से कट जाएगा, ठीक है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एक टेंजेंट थीटा होता है, राइट? ये जी यहां पे आ जाएगा, दिस विल कम हियर। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज टेंजेंट थीटा, so tangent theta is v square over rg, and you can write here tangent inverse v square over rg. That's how you do it, right? इस तरह से आप जो है वो जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट?
So a large bowl is made up of a hollow sphere, right? A small spherical ball is placed inside the bowl, right? Uh, ठीक है, and given a horizontal speed, ठीक है, इसको आपने horizontal speed दे दी है. The ball follows a horizontal circular path of constant radius. The radius is r as it is moving. The forces acting on the ball are its weight. एक देखिए नीचे weight नीचे act कर रहा है, उन्होंने बता भी दिया है यहाँ पे, ठीक है. And the normal reaction r. The reaction force is here. You see, this is r. ये देखिए उन्होंने इस तरह दिखा भी दिया, like this. ये उन्होंने side view लिया है इसका, and they have shown the normal reaction. ठीक है? Is that clear? उसके बाद जो है उन्होंने इस तरह से उसको दिखा दिया, और ये एंगल उन्होंने कह दिया कि थीटा है. This angle here is theta, right? This thing. अच्छा, अब वो कह रहे हैं the normal reaction force R is at an angle theta to the horizontal. By resolving the reaction force into two perpendicular components, show that the resultant force acting on the ball is given by the expression W is equal to F tangent theta. आपके पास देखें ये वर्टिकल सर्कल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है. हॉरिजॉन्टल सर्कल में नीचे वेट एक्ट कर रहा है. ये देखें ये एंगल उसने थीटा दे दिया. दिस एंगल इज थीटा विद हॉरिजॉन्टल. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको रिजॉल्व करेंगे इस आर को. देखिए ये आर इट कैन बी रिजॉल्व. दिस आर कैन बी रिजॉल्व. दिस इज गोइंग टू बी आर कॉस थीटा, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर दैट यू कैन सी, ठीक है. और आपके पास ये चीज है आर साइन थीटा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, दिस थिंग हियर इज आर कॉस थीटा and this is r sin theta. यहाँ तक क्लियर? ठीक है. अच्छा, अब उसने कहा है by resolving the reaction force into two perpendicular components, show that the resultant force. Yesterday I told you that the centripetal force is always the resultant force. ठीक है, तो resultant force क्या है? F है सेंटर की तरफ. तो can I write here, since the centripetal force is the resultant force, can I write here r cos theta is equal to F? लिख सकते हैं. I can also write, ठीक है, I can also write r sin theta is equal to W, because r sin theta is supporting the weight. ठीक है. I have two equations now. One equation is r sin theta is equal to W यहाँ पे इस केस में, और जो मैंने आपको उधर करवाया था उस क्वेश्चन में उन्होंने ये वाला एंगल दिया हुआ, यहाँ पे एंगल डिफरेंट दिया हुआ, इसलिए इसके सामने r sin थीटा के सामने वेट आ गया. वहां पे उन्होंने ये वाला एंगल दिया हुआ था जो मैंने अभी आपको नोट्स में करवाया, एंगल डिफरेंट था. सो r sin थीटा इज इक्वल टू W एंड r cos थीटा इज इक्वल टू F. आप इसको या तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, या आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर दें. ये पता ना, डिवाइड करके भी आंसर आ जाता है. आप ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन पर डिवाइड कर दें, तो ये r से कट जाएगा. Sin theta over cos theta is a very important mathematical identity. ठीक है, this is going to be tangent theta is equal to W over F, and W will become F tangent theta. You get the answer like this. इस तरह से आप लोगों ने करना है. हम इस वर्कशीट को मैं आपको दूंगा ग्रुप में, अभी हम लोग कर रहे हैं. State the significance of the force F for the motion of ball in the bowl. ठीक है, significance of force F is, but can we do it the way we did in the last question? Yes, we can do that. Of course, we can do that. I mean, if you knew this angle, you can do it like that as well. आप इसको 90 से माइनस कर दें, वो भी एक ही बात है. मतलब आपकी मर्जी है, आंसर आपका यही आएगा. ठीक है. अच्छा, उसकी सिग्निफिकेंस फोर्स मैंने आपको बताया था. सिग्निफिकेंस क्या है फोर्स की? इट प्रोवाइड्स द रिजल्टेंट फोर्स इज द सेंट्रीपिटल. F is the
centripetal force. F is the centripetal force, right? Are you getting what I'm saying? Okay, uske baad the ball moves in a circular path of radius 14. For this radius, the angle theta is 28. स्पीड ऑफ द बॉल आपने फाइंड करनी है और रेडियस उन्होंने आपको दिया हुआ है और एंगल 28 है, मतलब रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। जी आप 9.81 लेंगे, वी को आप सब्जेक्ट बनाएंगे एंड यू कैन डू दैट। रेडियस 14 है, एंगल 28 डिग्रीज है। ओके, व्हाट you'll do is you'll find the value of this जो आपको उसने कहा है स्पीड। देखिए उसने आपको बताया W इज इक्वल टू एफ टेंजेंट थीटा। W was the weight, mg. Centripetal force was mv square over r, tangent theta, right? ऐसे ही this m is going to cancel with this m. I'll make v the subject. So this becomes v square is equal to rg over tangent theta. And v is going to be under root rg over tangent theta. ठीक है, यहां पे मैं बताता हूं आंसर क्या। आर को आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 14 over 100 is 0.14, g is 9.81 and tangent एंगल आपको उन्होंने बताया हुआ है दैट इज 28। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आता है 1.6। एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं मुश्किल वाला। ठीक है, दिस इज वन क्वेश्चन दैट विल, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, दिस वाज इन द वर्कशीट। ठीक है, आपके पास रिएक्शन फोर्स आपने की, वेट आपके पास आ गया, और अगर किसी एंगल पे जा रहा है तो रिएक्शन उसका यहाँ पे हो जाएगा। अगर एंगल पे है, अगर सर्टेन एंगल पे है, और ये एंगल उन्होंने थीटा दे दिया, और ये था, और ये आपके पास क्या था, और साइन थीटा, this was r cos theta, and I showed you that r cos theta is equal to the centripetal force. Okay, and r sin theta is equal to the weight, and we were able to resolve them. तो और उसको हमने सॉल्व कर लिया, राइट? मैंने डिवाइड किया r sin theta को over r cos theta, and we get tangent theta like this. W is equal to tangent theta, right? अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, this is also about a horizontal circle. There is an aeroplane which is moving in a horizontal circle, right? This is an aeroplane that we have. It's a model aeroplane, and it is attached with a string of rope. ठीक है, एक मॉडल एरोप्लेन है, छोटा सा एरोप्लेन है जो मूव कर रहा है, एक रोप के साथ अटैच्ड है जमीन पे, और हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। ये देखें, ये जमीन के साथ अटैच्ड है। मैं इसको यहाँ बना देता हूँ दोबारा से। ये एक एरोप्लेन है इस तरह से, और ये रोप के साथ अटैच्ड है यहाँ पे, और ये सर्कल में चक्कर लगा रहा है, राइट? हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, अच्छा, ये जो स्ट्रिंग लगा हुआ है इसकी लेंथ है 40 की। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40.0 meters. There's a weight which is acting downwards, ठीक है, that is mg, and the mass is
0.50 kilograms. ठीक है. Omega, the angular speed with which it is moving, is 0.80 radians per second. Omega is the angular speed that we have. See, there's the lift force, which is L, which is acting upwards. अच्छा, इसकी लेंथ आपको दे दी है, राइट? और आपने फाइंड क्या करना है? आपने फाइंड करना है इसमें नंबर वन वेलोसिटी, दैट इज v. नंबर टू आपने फाइंड करना है इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है, टेंशन दोनों एंड्स पे होगी, मैं आपको बता रहा हूं. वैसे मतलब टेंशन में आपको हिंट दे रहा हूं, टेंशन यहां पे भी होगी, टेंशन यहां पे भी होगी. ठीक है. ये एंगल जो होता है वो होता है, ये वाला एंगल गिवन है, दिस इज गिवन एज 70 डिग्रीज. दिस एंगल इज 70 डिग्रीज, राइट? ठीक है. एंड नंबर थ्री, यू हैव टू फाइंड द लिफ्ट ऑफ द विंग्स ऑफ द एरोप्लेन. ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में आ सकता है, कैम्ब्रिज में. ठीक है, ये बहुत पहले आया था, तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा एंड आई इंक्लूडेड दैट इन माय नोट्स. सबसे पहले आपने आर निकालना. अगर आप इसका गौर करें तो लेंथ 40 है, ये 70 डिग्री पे है. तो अगर मैं लेंथ का वर्टिकल कंपोनेंट ले लूं तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा. अगर मैं इस लेंथ का, ये लेंथ है मेरे पास, और इस लेंथ का मैं वर्टिकल कंपोनेंट ले लूं, ये वाला देखिए, मतलब यहाँ पे तो आपको हॉरिजॉन्टल लग रहा है, राइट? ठीक है, इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बन रहा है. मतलब व्हाट आई डू इज आर इज एल साइन ऑफ 70. ठीक है, इस लेंथ का ये वाला कंपोनेंट, मतलब इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल बन रहा है, राइट? और नीचे वाला उसका वर्टिकल बन रहा है, राइट? वी नीड ओनली द रेडियस. सो आर इज L70, so R will be 40 sine of 70. And now once we've got it, we can find the velocity. Yes, V is equal to R omega. ठीक है, where 40 sine 70 and omega is 0.80. इसको आप करें, आपका आंसर आ जाएगा. ये आंसर आता है आपका 30.1. ठीक है. How will you find the tension? ठीक है, how will you find the tension? The tension is basically the centripetal force. So you can write here that T sine of 70 is giving you the centripetal force. देखिए, ये centripetal force, टेंशन का कंपोनेंट ये वाला आपको centripetal force दे रहा है. तो T sine 70 is equal to m omega square r. And that is going to be, T is what? T is the tension that we have, and sine 70, तो आप T is equal to m omega square r over sine 70 कर लें, आपका आंसर आ जाएगा. That is going to be 12.7 Newton. 12.7 या 12.8 आ रहा है. आप मैथ्स पुट करें यहाँ पे, ठीक है, जो आपने कैलकुलेट किया था. ओमेगा आपके पास था, ठीक है, और रेडियस आपके पास था, दैट वाज 40 sin 70.
जो आपने निकाला था ऊपर, और नीचे इसको आप करते हैं sin 70 and you get the answer. So the answer is around 12.7 Newton. इस तरह से आप इसको करेंगे. अच्छा, इसकी लिफ्ट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? लिफ्ट आप बताएं, यहां से क्या किधर निकल रही है ये? नीचे की तरफ. तो लिफ्ट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, टेंशन देखिए यहां पे जा रही है, mg यहां पे जा रहा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ है. तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है, देखिए वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है. टेंशन का कंपोनेंट, ये टेंशन है हमारे पास इस तरफ अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और हमारे पास ये एंगल था 70. सो ये टेंशन का भी एक कंपोनेंट नीचे बनेगा, ये नीचे इस तरफ. दिस विल बी t cos 70. Now it is in equilibrium, it is in horizontal equilibrium. It is in, ये बात समझ आ रही है? A1 फिजिक्स. ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस के सम की इक्वल होंगी. सो लेंथ, द लिफ्ट फोर्स हियर is equivalent to what? Sum of weight and this t cos 70, right? So the third part here is that this lift force is equal to mg plus t cos of 70. लिफ्ट mg आपने निकाला हुआ था, ठीक है, 0.5 को 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं. टेंशन आपने निकाल ली थी, दैट वाज 12.8 या 12.7 व्हाटएवर. और 70 से आप करेंगे, आपके पास लिफ्ट फोर्स आ जाए. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर. एंड you should know that the tension always acts away from the object. ठीक है जी. Everyone, I'm Cyrus S. Haag and I teach 4A level physics. My session for May June 25 examination is going to start from 15th of October for O level, IGCSE, AS level and A2. It's going to be a comprehensive, detailed 5-month session in which we're going to get a lot of practice from past papers, assignments, worksheets and quizzes. So what are you waiting for? Register via the link in bio and our team will assist you in registrations.